अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बश्शिरिल लज़ीना, और बशारत दीजिए उन्हें, ये हो मुझे पता नहीं म्यूट है कि नहीं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, बस ठीक है। अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर दें काइंडली। अच्छा, और ये आपको कुरान का सफ़ा भी नजर आ रहा है? आ रहा था, अब गायब हुआ। अब गायब हुआ है। एक मिनट। आ गया आ गया आ गया। आ गया जी। ठीक है जी। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और बशारत दीजिए उन्हें जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल किए सालेह। आमनू ईमान लाना, आप इधर कुर्सी लेके बैठ जाए। व अमिलुस्सालिहात, और अमल किए सालेह नेक। अन्ना लहुम जन्नात, के यकीनन उनके लिए हैं जन्नात, बागात हैं, जन्नतें हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी में जरी जारी से हैं, जारी हैं। मिन तहतिहा, जिनके तहत नीचे, जैसे हम कहते हैं ना मातहत, नीचे जो होता है मातहत, हाँ, जिनके नीचे अनहार, नहर की जमा अनहार। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा, रुज़िक़ू रिस्क दिया जाएगा, मिन्हा उसमें से, मिन समरतिन कोई फल, समर फल को कहते हैं, रिज़्क़न बतौर रिस्क। क़ालू, तो वो कहेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये वो है जो दिया गया रिज्क हमें इससे पहले। व उतू बिही मुतशाबिहा, या दिया जाएगा उससे मुशाबिहत वाला, यानी उससे मिलता जुलता, फलों से मिलता जुलता कोई फल जो डिफरेंट होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उसमें होंगी, फी में, अज़वाज, ज़ौज की जमा है अज़वाज, बीवियां, मुतहरा ताहर ताहिर, पाक, ताहिरा पाक औरत, तो मुतहरा पाक बीवियां। वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। खालिद कहते हैं हमेशा हमेशा को। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सर पहले से आवाज बहुत साफ हो गई है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, पहले बहुत ही दबी हुई आवाज आ रही थी। अच्छा, हाँ जी, अब क्या कर रहे हो? हाँ, अच्छा जी। आज हमने क्या रिवाइज करना, वो एज अ सब्जेक्ट क्या पढ़ना था? पैंक्रियाज एंड ऑप्स का एनॉमली स्कैन ऑफ ऑप्स था और पैंक्रियाज है। पहले हम ऑब्स्टेट्रिक्स करेंगे। हाँ जी, किधर है? नहीं नहीं, मुझे बताएं। अच्छा, सॉरी,
नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। ऑल राइट, ये आपके सामने एक फीटल हेड है जिसमें आप ये थैलेमाई देख रहे हैं एरो की शक्ल में, बिल्कुल जैसे एरो हेड होता है. एंड ऑन द बैक ऑफ द एरो हेड वी कैन सी द cavum septum pellucidum. Here also we can see the fetal head and this rectangular space which we already have discussed is the cavum septum pellucidum. If the cavum is on the frontal bone side, as we already know, the posterior horn of the lateral cerebral ventricle will be on the occipital side. Yes side, this is the frontal bone side. And this side is the occipital bone side. So in the posterior cranial fossa here, we will see the posterior horn of the lateral cerebral ventricle. This posterior horn is lying inside a cushion of the brain. All around this tubular posterior horn is the cushion of the brain cushion. And ये ना शोर बहुत ज्यादा है, ये सबको आपने म्यूट करना है. वो शुरू वाला नहीं किया जी, वो कर दिया फिर भी नहीं, आपने उसमें कहा था कि जो भी आएगा वो होगा. अच्छा, ऑल राइट. सो माय डियर, the posterior horn of the lateral cerebral ventricle is surrounded by a cushion. This lateral cerebral ventricle passes through the middle cranial fossa and into the anterior cranial fossa where the anterior horns are. But out of the three cranial fossae, the biggest is the posterior cranial. ये जो posterior cranial fossa है सबसे बड़ा है. So where are we going to find maximum cushion? In the posterior cranial fossae. Therefore, if any ventricular dilatation will start, अगर ये tubular ventricular dilatation शुरू होगी तो सबसे पहले वो किस फोसा में शुरू होगी? क्योंकि उधर कुशन ज्यादा है, उधर पैरेन्काइमा ज्यादा अवेलेबल है फॉर अ डायलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू कंप्रेस. उधर वो आसानी से डायलेट होगा. एंड देयरफॉर the posterior horn will dilate first. सबसे पहले कौन सा horn dilate होगा? Posterior horn. Normally, the posterior horn of the lateral ventricle is less than 10 millimeter
in diameter. If the posterior horn of the lateral cerebral ventricle is 10 or more, we will take that as ventriculomegaly. If we find this posterior horn of the lateral cerebral ventricle more than 10 millimeter in diameter, and where are we going to measure it? The site where we are going to measure it. If you look, can you appreciate a white structure inside? Can you see this white structure? This is the choroid plexus. Can you see this white structure within the ventricle? So where this choroid plexus ends, there we are going to measure. What? The posterior horn of the lateral cerebral ventricle, we will measure where the choroid plexus ends posteriorly in the posterior cranial fossa. And this is one. Another important thing to remember here is that the walls of the posterior horn of the lateral cerebral ventricle, which you are looking here, can you appreciate that these walls are very bright? These walls are very bright. These two walls must not touch the midline. This wall should not touch the midline. And this lateral wall here should not touch the cranial bone. The two walls are separate. These two bright walls are away. We will not take any wall as the wall of the posterior horn of the lateral ventricle if it touches the midline. ये कौन सी wall है? ये midline है ना? This is midline. We will not take, देखें, look at here, look at, we will not take this space. We will not take this space as the posterior horn. Why? Because this wall cannot touch this one. It cannot go there. इसको आप posterior horn की wall लेंगे? No, because it is in the midline. And this wall will never touch this midline. लिहाजा आपने इस कैविटी को पोस्टीरियर हॉर्न नहीं कहना, आपने इस कैविटी को, इधर देखें प्लीज, दिस इज नॉट पोस्टीरियर हॉर्न. क्यों? बिकॉज इफ दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न, then this wall is touching the bone. So the two walls of the, bhai aapke samne hai, there are three tubular structures. One between this white line and this white line. Two between this white line and this white line. Three between this white line and this one. ये कोई शरारत कर रहा है हमारे साथ. ये कोई
وہ ادھر یوں لے آتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں جی اینی وے یہ ذرا ہوتا ہے نا کمپیوٹر میں ہر طرح کی آڈینس آپ کو ملتی ہے اب وہ میرا خیال ہے چونکہ اسے میوٹ کیا ہوا اس پارٹیسپینٹ کو تو وہ رنگ بھر رہا ہے ہمارے ویری انٹرسٹنگ اس وقت جو ہماری آڈینس ہے اس میں آسٹریلیا سے بھی لوگ ہیں ویسٹ انڈیز سے بھی اور افریقہ سے بھی وہ سب یہ لیکچر سن رہے ہیں تو اس لیے میں زیادہ انگریزی بول رہا ہوں اردو کم بول رہا ہوں All right. So, my dear, there are 3 tubular structures. 1, 2, and 3. And all are black. But with the exception that the one which is seen in the middle, it has got 2 distinct walls, and none of the 2 is touching either the midline or the cranium. Is this thing clear? یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دا ریزن بینگ دیٹ مینی اے ٹائمس a sonologist will see a patient who is really very ultrasoundable. یہ کون سا پیشنٹ ہوتا ہے a thinly built patient with very beautifully outlined skull and all the structures inside are seen beautifully. And there you see multiple tubular structures, and out of those multiple, you just select one as the posterior horn of the lateral ventricle. And when you measure it, it is more than 10 mm. So the diagnosis of ventriculomegaly. Reason being that that person is very ultrasoundable, and that sonologist, he doesn't know that the walls of the posterior horn of the lateral cerebral ventricle, they stay away from the midline as well as from the cranium. یہ بات آپ نے بھولنی نہیں. So, my dear, this is how we find the skull. We also find a dumbbell-shaped structure. The arrowhead is pointing towards it. You can see the dumbbell-shaped structure. And this is the cerebellum. The white line which you are looking upon is the diameter of the cerebellum. We take the diameter of the cerebellum where we find maximum transverse dimension. And when you see maximum transverse dimension, this midline structure here, where the 2 cerebellar hemispheres, they join together, this structure in the midline is called cerebellar vermis, vermis. The 2 cerebellar hemispheres, they join at the vermis, from where the fibers of one cerebellum, they are going and coming from the other cerebellar hemisphere. Aapas mein connection is through the connection of the 2 cerebellar hemispheres is through the cerebellar vermis. Similarly, in the cerebral hemispheres, the connection is through the corpus callosum. So, my dear, from this vermis to this posteriorly placed
occipital bone on its inner side. मुलाजा कीजिए. This I'm talking about. There you see the two cerebellar hemispheres, and this is the cerebellar vermis, and from the cerebellar vermis to the inner surface of the occipital bone, this space is a cistern where the meninges are reflected. If there is a corner like this, the meninges, they are covering that corner. And this space is called a cistern. This is an angle of the door and the wall. And if I put something here like this, then this is a cistern, a space surrounded by the brain on one side and the meninges on the other. So that space is called a cistern. This is the cerebellopontine cistern or cisterna magna. The widest cistern is this, cisterna magna. We find dilatation of the cisterna magna if there is obliteration of foramina of the fourth ventricle. Fourth ventricle has got foramen, through which the CSF flows. So if those foramina are closed, obliterated, foramina of Magendie and Luschka, foramina of Magendie and Luschka, ये पढ़े थे एनाटमी में कभी, आप भुला गए तो कोई बात नहीं. When fourth ventricular foramina, they are obliterated, what do we see? Dilatation of the cisterna magna, and it grows beyond 1 centimeter in diameter. And cisterna we will measure like this. As you have seen this is the CM, cisterna magna. From the surface of the vermis to the inner surface of the skull bone. But please remember, we take or we measure the cisterna magna only when we see the widest transverse cerebellar diameter. When we see the widest transverse cerebellar diameter, then we measure cisterna magna. Otherwise, if we are not focusing on the transverse cerebellar diameter in its widest dimension, then cisterna magna will appear bigger than normal. If the fourth ventricular foramina of Magendie and Luschka, they are obliterated, we will find cisterna magna dilated. And that condition where we find dilatation of the cisterna magna is called Dandy-Walker syndrome. And that dilated cistern is called Dandy-Walker cyst. A dilated cisterna magna is called Dandy-Walker cyst. So, my dear,
we have seen the biparietal diameter, and at the same section where we take the biparietal diameter, we will take the head circumference as well. So head circumference, we draw this line through elliptical method. All